Reverse bias. Okay. So Zener diode is a diode which can be used Reverse Breakdown bias. voltage. in a reverse bias, right? Reverse bias. Reverse Yes. bias. Whenever the Zener diode is in reverse bias, what is the voltage across it? That is your breakdown voltage, right? And that is also called as your Zener voltage, correct? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. What else? What else we have seen? Two types of breakdown, avalanche and river. Avalanche and Very Zener good, breakdown. very good. So two types of breakdowns are there. One is avalanche and another is your Zener breakdown. Okay, great. Now, what else? The So register your used voice is is the register used is said as a series register or current limiting हाँ, register. वेरी गुड वेरी गुड. सो एक रजिस्टर लगा देते हैं हम सीरीज में जिनर डायोड के, उस रजिस्टर को वो बोलेंगे हम सीरीज रजिस्टर, राइट? ओके, गुड गुड गुड. ओके, what else? What is the range of operation of Zener diode? IMAX to IMIN. I'm IMAX to into MX. I Yes. mean to IMAX. IZ min to IZ max, right? Knee current. Okay, मतलब क्या होता है कि Zener diode will maintain a constant voltage of VZ across it. Zener diode will maintain a constant voltage of VZ across it. Okay, only when it is in the operation range of operate, or whenever it is in the range, right? And what is range of operation of Zener diode? It is from IZ minimum to IZ maximum. If the current is above IZ maximum, then what will happen? The Zener diode may get damaged. Damage. And if it is below IZ minimum, then what? It will not maintain a constant voltage of VZ across it, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. great, great. Okay, and then we have seen that what is the application of a Zener diode? Okay, avalanche breakdown. That is due to what? Carrier multiplication, right? So the process of carrier multiplication is called as avalanche effect, right? Sometimes it is also provided. Sometimes it is also called as avalanche, right? And yeah, second breakdown is your Zener breakdown. So what is Zener breakdown? What is Zener breakdown? Hello. It occurs due to high voltage. It occurs due The to high field application density. of high High voltage, electrical intensity. very high electric field intensity of the order 10 into 3 into 10 raised to 5 centimeter volts per centimeter cube, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sai sir. puchta, right? Okay, good. And then what is the famous application of Zener diode? Zener diode as a voltage regulator. Regulator. Yeah, regular. Okay, so let us continue our discussion with that. So, yeah, just a second. Okay, so we have let us say we have a Zener diode. We need to connect a Zener diode. So before connecting directly the supply, right? Let us say that there is an input supply, right? So let us say that this is V in, which is given between these 2 points, okay? And then now we will be connecting this V into Zener diode, right? So this is a symbol of a Zener diode, and we are applying positive to cathode and negative to anode, so that this Zener diode is in reverse Reverse bias, bias. and this resistor is called as RS, series resistor or current limiting resistor. And then we are taking the load across this Zener diode. So here I am connecting this what we Sir, can your say voice as is extremely RL, low. right? Okay, and then let me go if there is anyone in the waiting room. Okay, no problem. Now this is the basic circuit, right? And then where we are taking the output, so output we are taking across this RL, and whatever output is there, so let us say that the voltage is VL, or that is say that it is your output voltage, right? Now let us say that the voltage across this diode, right? What is the voltage across the inner diode? VZ. PZ. So voltage in parallel is same. So these two components are in parallel. So this voltage is equal to VZ, right? Now talking about the currents, right? So now in this, right, this is your one basic loop, right? So this is a loop. So current is flowing in this loop. So we know that V in, right? V in is nothing but, yes,
let us say that the current which is flowing in RS is IS, right? So it will be IS IS. ISRSI. RS, RS. and then it will be plus some voltage will get drop across Volt. this VZ, right? So this was your equation number one. This was by KVL. Okay, ये किससे आता था? By Kirchhoff's voltage law. Okay, so यहाँ से हम IS का वैल्यू निकाल सकते हैं, and this IS is nothing but V in minus VZ divided by RS, right? So this is equation number two. ये भी देखा था हमने, right? This is simple Ohm's law, correct? Yes, sir. And then let us say that this current through Zener diode is IZ, and this current through RL is IL, and this is the current which is flowing through RL. So therefore I can say that this is the second equation. IS is nothing but the summation of IZ plus IL, right? So this is equation number 3, right? And one more equation, very simple equation, I can say that what is VZ? Can I say VZ is nothing but IL into RL, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. So these are the basic equations which we have seen. Now, what is our job? Our job is to see two types of regulations are there, right? So how many types of regulations are there? There are two types of regulations. Okay, one is right. See, what is voltage regulation? You know, for example, that you are connecting your charger. Okay, now charger का input कितना होता है? What is the input of the charger? Let us say एक example दे दो. What is input of the charger? Let us have a simple example, right? Let us say that input is 230 volts, right? Correct? 230 volts of a Yes, charger. sir. Okay, now if the input varies मतलब क्या? Variable का symbol है, ऐसा arrow लिख दूंगा मैं. Okay, so if it varies from, let us say 200 volts to 250 volts, right? Okay, so even if the input is varying from 200 volts to 250 volts, right? So what is your expectation कि चार्जर ने आउटपुट कितना देना चाहिए, राइट? 230 volt. हाँ, 12 वोल्ट्स देना चाहिए, राइट? ये लैपटॉप का चार्जर है, तो आउटपुट कितना रहना चाहिए? 12 वोल्ट्स ही रहना चाहिए. 200 वोल्ट रहेगा इनपुट में तो भी 12 वोल्ट्स रहना चाहिए. 250 वोल्ट रहेगा चार्जर के इनपुट में तो भी 12 वोल्ट ही रहना चाहिए, राइट? सो ये पहला केस है, एंड दिस केस इज कॉल्ड एज, राइट, दिस केस वी कैन कॉल इट एज, right? This is your first case, okay, and this case we can call it as yes. What is varying here? Varying input. What is constant? Constant output, right? So what Output. is our output? What is output? 12 Output volts. किसके 12 across? volt. 12 volt. Output किसके across लेते हो आप? RL के, right? RL. So input is varying and output is constant, right? Constant. So this is regulation with varying input and constant output, correct? Yes, no? Yes, Yes, sir. sir. So sometimes it is also called as line regulation. मतलब input line में अगर input में अगर कम ज़्यादा है तो भी आपका expectation क्या है कि आपके चार्जर में 12 volts constant देना चाहिए, right? So ये क्यों देता है? It gives because of this voltage regulator, Regulator. right? And who is regulator here? Zener diode. Zener diode. Zener diode. Voltage regulator, right? So this is a topic called as Zener diode as a voltage regulator, which will now how it will give constant output. Let us see that, right? So I will just write two equations, right? I will just write two equations here. तो देखिए थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ who is variable here? V in, right? V in is the variable. दो बार लिखता हूँ इक्वेशन, ओके? नाउ अभी सुनिए, V in and then I will just write an equation like what is your equation? Our equation is 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 equal to, बोलिए, IZ plus IL, okay? And finally what you want output? Output is nothing but IL into RL. To RL. ओके, सो ये पूरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL, राइट, एंड V नॉट इज इक्वल टू IL प्लस RL, राइट.
अभी देखिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू मैथमेटिकली हाउ इट इज गिविंग कांस्टेंट आउटपुट, राइट। लॉजिकली मैंने कल बता दिया था और अभी भी बता दिया है कि वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड इज कांस्टेंट व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस एंड दोनों पैरेलल में है, तो आउटपुट में इसके VZ ही आना है, राइट। ओके, नाउ लेट अस टॉक समवॉट मैथमेटिकली। ओके, तो देखिए, सी V in, what can be varied? V in, राइट। सो अगर V in इंक्रीज होता है, V in इंक्रीज होता है, V in इंक्रीज होता है, तो IS क्या हुआ? यहां से देखिए इक्वेशन, इंक्रीज होगा। वेरी गुड। सो Increase. IS इंक्रीज होगा। ओके, अभी सुनिए, IS इंक्रीज हुआ, IS इंक्रीज हुआ, तो ये IZ है ना, IZ विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है? यस सर। IZ विल Yes, sir. डिक्रीज, बिकॉज इसमें ऑप्शन क्या है? IZ को ऑप्शन है ना, IZ कैन वेरी फ्रॉम IZ मिनिमम टू IZ मैक्सिमम, मैक्सिमम। Maximum. and it will decrease in such a way that it will uh, take care that IL will be fixed। मतलब लोड में से जो करंट जा रहा है ना, वो कैसा है? फिक्स है। ओके, तो अभी IL कैसा बन गया? फिक्स है। RL कैसा है? कांस्टेंट है। Constant. सो ये भी कांस्टेंट है, फिक्स मतलब कांस्टेंट ना। सो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सो V नॉट विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट। Constant. समझ में आ रहा है? सो V नॉट विल बी कांस्टेंट। समझ में आया? तो वोल्टेज इंक्रीज हुआ, फिर भी हमें आउटपुट कांस्टेंट मिल रहा है मैथमेटिकली। इज इट करेक्ट? यस सर। Yes, sir. बोलिए अभी, बोलिए। V इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? V डिक्रीज हुआ तो IS डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो जाएगा। increase हुआ तो फिर क्या होगा? IZ IZ इंक्रीज होगा। increase होगा, राइट। ये IL कैसा है? कांस्टेंट। फिक्स। तो IL अगर कांस्टेंट है, राइट, RL भी कैसा है? कांस्टेंट है, तो V नॉट भी कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। So Constant. can I say that this is your line regulation, or like this Zener diode will act as a voltage regulator even though, yes, even though the input Input is variable. variable. Input is variable. Very good. Okay. Now second case, let us say that your input is fixed. Sometimes what happens, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इनपुट तो फिक्स है, लेट अस से दैट इनपुट इज फिक्स्ड एट 220 volts। ओके, नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस, योर लोड विल बिकम वेरिंग। ओके, फॉर एग्जांपल आप ऐसे करते हो कि आपका लैपटॉप ने सेल फोन ले लीजिए, राइट। मेरे पास MI का चार्जर है, एंड देन आई एम कनेक्टिंग, आउटपुट कितना दे रहा है MI का चार्जर? 5 volts, राइट। एंड आई एम कनेक्टिंग माय मोबाइल एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस चार्जर शुड गिव 5 volts आउटपुट। अगर दूसरे का मोबाइल कनेक्ट किया तो आउटपुट कितना रहना चाहिए? 5 volts ही रहना चाहिए, और रहता है क्या? रहता है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस? करंट इज द डिफरेंस। ओके, सो irrespective of change in the load, what I am expecting कि मेरा जो पावर सप्लाई, मेरा जो चार्जर है, उसने 5 volts ही देना चाहिए, ये मेरे एक्सपेक्टेशन होते हैं, राइट। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. So my second thing is that yes, what is varying, here we can say that RL VIN is constant। varying and V in is constant। Varying. constant। तो ये क्या? Constant. load regulation, it is giving load regulation। so again can I write the same equations? Again can I write the same equations? What I will be doing here, who is changing? Let us say RL will change, okay, and then we have the equation IS is equal to IZ plus IL, and here V naught is equal to IL into RL. And one more time I will write this equation, this IS is equal to IZ plus IL, right, and this will be V naught is equal to IL into RL। Okay, now what is constant here? Can I say V in is constant? यस Yes. सर। Yes, sir. So, इनपुट so इज Yes, sir. कांस्टेंट। in is constant, right? I'm expecting that you are taking the handwritten notes, right? So VZ constant है, RS constant है, V in constant है, तो IS constant है। So can I say in both the cases, right? How is your IS? It is constant, right? Constant. Okay, okay। Now what happens, अगर RL increase होता है तो, right? If RL increases, right? If RL increases, what will happen? सुनिए, RL increase हुआ तो IL को ये कैसा चाहिए हमें? कांस्टेंट। V नॉट कैसा चाहिए? कांस्टेंट। तो कांस्ट IL को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। डिक्रीज होना, Decrease.
राइट। सुनिए, आयल को डिक्रीज होने के लिए आईजेड को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज, टू मेंटेन Increase. दिस कांस्टेंट, राइट। सो आरएल इंक्रीज होता है तो आईजेड भी इंक्रीज होता है, सच दैट दिस आयल विल डिक्रीज, लोड के पास थोड़ा कम करंट जाएगा, मतलब अगर यहाँ से 100 आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, आईजेड 80 जाएगा, लोड पे 20 ही जाएगा, समझ में आ रहा है। सो दैट दिस आयल विल डिक्रीज इन अ सेम प्रोपोर्शन इन विच आरएल इज इंक्रीजिंग, मेंटेनिंग वी नॉट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, राइट। Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस से सेकंड केस। ओके, आरएल अगर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, आरएल अगर डिक्रीज हुआ तो आईएल को बढ़ना पड़ेगा, इंक्रीज मतलब होगा। क्या, आईजेड भी डिक्रीज होगा, सो दैट आईएल विल इंक्रीज। ओके, समझ में आ रहा है, मतलब अगर आईएस कम हुआ ना तो क्या होगा, आईएल को 20 वोल्ट ही जाने, 20 एम्पियर से ही जाने देगा, ये क्या होगा, आईजेड 100 वोल्ट से, लेटेस्ट से 100 एम्पियर से थोड़ा कम हो जाएगा। गेटिंग? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके ओके। So, any problem in this? So this is No, called as sir. yeah, this is called as varying load and input is constant. Any problem in this? No, sir. Okay, No, so sir. let me go to the PPT and let us in the diode. So you can see my screen properly, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So सुनिए, this is a very simple thing which I can tell you that this is Zener diode, how it looks. Okay. And then this we have seen, right. So let us have a problem on a Zener diode, right. Let us have a problem on a Zener diode, and see, this is, yeah, so this is your Zener diode. Okay, circuit थोड़ा सा अलग draw किया है इन्होंने, but the circuit is same. Okay, so what he is saying, that uh, of a 5 volts stabilized power supply is required, मतलब output कितना चाहिए आपको, Constant 5.0 5 volt. volt. so what you will take, VZ of 5 volts you will take, correct. Zener diode जिसका जो 5 volts का है वो आप सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट। Yes, sir. Yes. ओके, अभी इसको मैं ऐसे ड्रॉ नहीं करता हूँ, राइट। ये रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया तो ये फैमिलियर सर्किट है आपके लिए, ये आरएस है, Yes, ये sir. प्लस भी है यहाँ पर, करेक्ट। ये इसको मैंने सिर्फ 90 डिग्री से ऐसे झुका दिया है, गेटिंग। Yes, sir. तो सेम Yes, sir. सर्किट है, सेम सर्किट ही रहेगा। Yes, sir. Yes, same नाउ, circuit. या 12 वोल्ट्स डीसी पावर सप्लाई इनपुट सोर्स, राइट, मतलब इनपुट कितना है, 12 वोल्ट्स है। ओके, मतलब वी इन इज हाउ मच, वी इन इज 12 वोल्ट्स, 12 volt. करेक्ट। 12 volt. Now using Zener regulator circuit, calculate maximum current flowing through the Zener diode, राइट। आरएल कैसा है यहाँ पर, वैरिंग है। सो कौन सा केस बन गया आपका, सेकंड केस, जिसमें इनपुट कांस्टेंट है, आरएल वैरी होता है। Varying. सो व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू कैलकुलेट मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द Zener diode, मतलब व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट, आई जेड I Z. Said. मैक्स, आई जेड मैक्स, करेक्ट। Yes, sir. द Yes, वैल्यू sir. ऑफ सीरीज रेजिस्टर आरएस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट, विथ नो लोड, राइट। विथ नो लोड मतलब क्या, विथ नो लोड मतलब क्या, Register without register. RL. resistor मतलब RL is equal to 0, okay, when 0. RL is not connected. Then load current IL if load resistor of 1K is connected, मतलब ये क्या दिया है, Load. RL जब RL. 1K होगा तो what is the value of IL, ये आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट। Yes, sir. Yes, And sir. finally IZ at full load find out करना है, right. You need to find when it is full load means what, when RL is equal to 1 kilo ohms we will calculate the value of IZ. Any problem in this, समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, okay, okay. So let us see how to calculate maximum current. Okay. So ये मैं पूरा आपको करके दूंगा, just see. Maximum current can you find? Voltage दिया है, so P is equal to V into I, ये पता है आपको, right? Power is Yes, equal sir. to voltage into current, right? Voltage is given 5 volts, right? Maximum voltage is 5 volts. Output voltage चाहिए, power कितना है 12 volts, so maximum current क्या बन गया, 400 400 400 milliampere. milliampere. Correct. What is this 400 milliampere? Maximum maximum current. Maximum current. current. Zener diode Okay, आपकी okay, Current good. maximum. Okay. Now आर एस कैलकुलेट कर सकते हो, वी एस पता है आपको, वी एस मतलब इनपुट, वी एस मतलब वी इन, वी इन कितना है आपका 12 वोल्ट्स, 12 वी volt. जेड
5 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स 5 का volt. डायोड लिया। आईजेड पता है आपको, आईजेड कितना है 400 मिली एम्पियर। कहाँ से 400. मिला हमें, यहाँ से मिला, करेक्ट। Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो आरएस मिल गया आपका। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ कैन यू कैलकुलेट दिस आईएल। आईएल कैसा आएगा, आईएल मतलब ओके वीजेड, वीजेड मतलब हमने ये लिखा था वीजेड इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस लोड दैट इज इक्वल टू आईएल इनटू आरएल। सो यही RL. फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है हमने, आईएल निकाल लिया, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. एंड देन व्हाट वी वांट आईजेड, आईजेड इज इक्वल टू आईएस, क्या बोल रहा था, आईएस इज इक्वल टू आईजेड प्लस आईएल, सो आईजेड इज इक्वल टू आईएस माइनस आईएल। सो RL. दिस इज योर पार्ट डी, करेक्ट। Yes, sir. चलो ये आपको मैं बोलता हूँ कि ओनली 20% समझा होगा, लेट अस डू इट इन अवर वे। ओके, सो ये हमारा राइट। So this was the problem with us. Okay, so let us take this problem as it is, and okay, now let us solve this problem. Okay, सुनिए, सर्किट आपका ऐसा है, तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या, I will just go on, थोड़ा सा आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ, है ना, लगेगा। सो दिस ये आपको अगले प्रैक्टिकल में करना है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, क्या हुआ, कुछ नहीं है इसमें। जस्ट अ सेकंड, ओके। ओके, सुनिए, सो so let us okay, so can I say this is RS, this is RS, right? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. So this is your VZ कितना चाहिए आपको, 5 वोल्ट का। ओके, 5 volt. 5 VZ कनेक्ट कर दिया है। ओके, ये जो है ये कौन सा है आपका, RL है, राइट। सो RL कितना चाहिए था आपको, 1 किलो ohms का, राइट। 1. Yes, sir. Okay. सुनिए, let us go back here. See, 5 volts Zener diode, right? 5 volts stabilized power supply चाहिए आपको। ओके, इनपुट में कितना है, 12 volt. 12 12. volt. So I'm just writing here input is nothing but 12 volt. Then VZ is nothing but 5 volts. Correct? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Power is equal to 2 watt. Okay. And power is nothing but VZ into IZ. Okay. So what is IZ? 2 divided by VZ 5. So how much it is? 0.4 Point. ampere, right? Or it is 400, 400 milliampere. Milliampere. बराबर है। सो मैक्सिमम करंट थ्रू जेनर डायोड इज 400 मिली एम्पियर। मतलब ये क्या बन गया आपका, आई जेड मैक्स। Max. ओके, एंड देन व्हाट इज आर एल, व्हाट इज आर एल, 1 किलो ohms फ्रॉम हियर, करेक्ट। Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो लेट मी टेक एंड व्हाट इज आर एस, आर एस क्या है आपका, वी इन माइनस वी जेड डिवाइडेड बाय आई।
RS Z. I said. IS, right? When no load is there, so therefore, right? सुनिए, what is IS? IZ plus IL. I Okay. नो लोड, लोड है नहीं है, मतलब RL कितना है? 0 है, 0. मतलब लोड नहीं है तो IL भी 0 रहेगा, right? So if this is 0, IZ is equal to IS, right? So how much it is? 12 minus 5 divided by 400. 0.4. So it will be 7 by 0.4, correct? Yes, sir. Yes, sir. So how much it is getting? 17.5 ohms, correct? Yes, Yes, sir. no? Okay, okay, great. So this is, so let me configure it. Okay, let me configure it. How much it is? Input कितना है आपका? Input 12 volt. 12 volt. 12 12. volt. How much it is? 17.5 ohm. 5. 5 5 ohm. ohm. एंड जीना डायोड तो 5 वोल्ट का ले लिया मैंने, राइट? आरएस कितना था आपका? 1 किलो ओम्स का, राइट? ये वेरिएबल है, इज इट वेरिएबल? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay. Okay. And now I will just start simulating. So so output you can get, output should be 5 volts, right? Zener diode is of 5 volts, correct? Yes, sir. Why it is 10 volts? Just 1 second, okay? सेवनटीन पॉइंट फाइव किलो ohms है क्या ये? 17.5 किलो ohms होगा ये, राइट? Yes, sir. 17.5 kilo ohm होगा. Oops, गड़बड़ हो गया. Just 1 second, okay? Okay, so RS is 17.5 kilo ohms, okay? 17.5 ohms ही है, okay? Okay, so IL is 5 milliamperes, right? And okay, so let me, now this is your variable R, so I'm just changing it out. So there is just 1 second. This is all is correct only. So this should be 400 milliamperes, right? So we will just change it. So this is no load condition, right? So we want it when it is 5 volts, right? So exactly when it is 400 milliamperes, you will get 5 volts, right? Okay. So your input is fixed, so load is varying, correct? Getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here just I need to adjust it, but I'm not able to adjust it very finely. But anyway, you can get that, okay, whenever it is, okay, now are you getting the concept? ये problem समझ में आया आपको? ये problem समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Good.
Now let us say that let us do it for let us say that this is 220 ohms, 220 ohms, right? And let us say that this is 10 volts. Okay. So now this is again a fixed input. Okay. So you can say that even though if you are varying the output, right? Even though if you are varying the load, okay. So what is range of operation of Zener diode? सबसे पहले we can calculate what is IZ minimum. What is uh, okay. Now let me give you this thing. In this case, which is this case? First or second case? Second. Second. Second, sir. Second, Second case. right? Okay. So IS is equal to IZ plus IL, right? Okay. Yes, sir. So Yes, sir. IZ minimum and IL maximum, Maximum. करेक्ट? नहीं तो फिर IS क्या हो सकता है? IZ IZ maximum and IL minimum. IL minimum. Minimum. Okay. Now what is V in here? 10 volt. 12. Okay. Here 10 volt. RS is, 220 volt. can you calculate IS? Can you calculate IS? VZ is here. Yes, sir. Yes, VZ sir. is 5 volts. 5 volt. So IS will be, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? V V. in minus VZ divided by 220 volts. How much it is? How much it is? 0.02. 0.02 0 2. amperes. Correct. So this is 0.02. मतलब इसको मैं ऐसा बोलता हूँ 20 मिली एम्पियर. Correct. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Now see here. What is IZ minimum? Okay. सुनिए. VL is equal to IL into RL. Right. So V in कैसा है? Constant. 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 Okay. So VL कैसा है? Constant. So ये भी constant है ना? ये कितना चाहिए? 5 volts चाहिए. Yes, आउटपुट sir. वोल्टेज, राइट? सो अगर IL मैक्स है तो RL क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा. करेक्ट. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके. RL मिनिमम कितना हो सकता है? 0 ohms. Rooms. बराबर है. ओके. सो सुनिए, IL मैक्सिमम को IZ मिनिमम चाहिए. IZ मिनिमम कितना दिया है? सो वो हमें एक तो दिया रहेगा, राइट? और ये प्रोवाइडेड रहेगा कि RL का मैक्सिमम आपका वो RL का रेंज है, लेट अस से RL का रेंज कुछ तो भी रहेगा, दिया रहेगा आपको. ओके. और यू नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ RL. तो कौन सा तो भी एक दिया रहेगा आपको. सो अगर आपको ये दिया है कि IL मिनिमम is or IL maximum is some, let us say some value, right? So can you calculate RL minimum, RL maximum? अगर ये रेंज दिया है तो RL minimum, RL maximum कैलकुलेट कर सकते हो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और Yes, अगर sir. RL minimum दिया है, RL का रेंज दिया है, तो IL आप फाइंड आउट कर सकते हो. करेक्ट. Yes, sir. ओके. ओके. गुड. सो लेट अस से दैट हमें IZ मिनिमम दिया है. ओके. सो इफ वी गेट IZ मिनिमम, कैन वी फाइंड IL मैक्सिमम? करेक्ट है ना? Yes, sir. ओके. सो लेट मी गिव यू ये रेंजेस कहाँ से मिलेंगे? ये सब कैलकुलेशन है, राइट? सो आई कैन से Zener diode 5 volts data sheet. So let us say that this is your diode. Okay, you can take this data sheet. Let us say that I can
see the data sheet. Okay, so we can just download or we can click to view. Okay, so like this your Zener diode will look, correct. VZ का रेंज कहाँ से कहाँ तक है इसका? 3.3 से 100 वोल्ट तक है, राइट, करेक्ट। थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं इसके बारे में। ओके, नाउ आपको कितना वोल्टेज चाहिए? VZ कितना वोल्टेज चाहिए बोलिए? VZ 5 volt. 5 वोल्ट। 5 volt. 8.1 वाला डायोड यूज करेंगे। कौन सा इसका नंबर? IN 4733। कितना वोल्टेज है इसका? 5 volt. 5.1 वोल्ट। ओके, टेस्ट करंट 49 मिली एम्पियर है, राइट। रिवर्स लीकेज करंट ये है, राइट। सर्ज करंट ये है, डायनामिक रेजिस्टेंस ये है, रेगुलेटर करंट IZ मैक्स, राइट। दिस इज दिस थिंग, मिली एम्पियर इन मिली एम्पियर, राइट। समझ में आ रहा है? गेटिंग इसका? Yes, sir. ओके, सो इसमें हमें Yes, sir. इसमें हमें क्या चाहिए? कितना इसका IZ मिनिमम करंट? IZM कितना है? 178. 178 मिली एम्पियर, 178. राइट। Yes, sir. 178 मिली एम्पियर, ये मैक्स। मैक्स के ऊपर अगर जाएगा तो क्या होगा? Damaged. Damage हो जाएगा। गुड, सो लेट अस सी 178 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा? सो सुनिए, IL मैक्स को चाहिए मतलब IZ मिनिमम करना पड़ेगा। IZ मिनिमम मतलब क्या करना पड़ेगा? IZ को मिनिमम करना है मतलब क्या करना है? IZ को कम करना है तो IL को बढ़ाना पड़ेगा। IL को बढ़ाना है तो RL को कम करना पड़ेगा, राइट। RL को कम करना पड़ेगा। सो हियर आई एम जस्ट डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, right? And if I am decreasing the value of resistance, you are not getting output constant, correct? Are you getting? No, sir. Okay, so anyway, this is one point, right? What we can say that the values we will discuss in the what we can say in our lab. Okay, or let us complete it now only, not an issue. I'll just rub it. Okay, I'll rub this values. So this is your experiment number 6, regulator. Okay, so here we will take a resistor, right? Okay, so let us say that, okay, where is that? कहाँ पर कर रहे थे हम लोग सर्किट डिजाइन? ओके, सो हाँ यहाँ पर थे। ओके, यहाँ पर, यस। सो नाउ लेट अस से दैट आई हैव अ न्यू सर्किट। ये हो गया था ना हमारा सर्किट डिस्कशन, ये चल रहा Yes, है। sir. ओके, तो ये सर्किट कैसा है? ये सर्किट आई विल जस्ट टेक दिस सर्किट। हाउ मच टाइम वी हैव? ओके, 15 minutes we have. Okay, I'm just taking the circuit. Okay, and okay, so can I say that this is the circuit what we are dealing with? कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, राइट। 220 लिया था ना हमने लेटेस्ट में। Yes, sir. Yes, sir. ओके, and this RL is variable, right? And this is V in, that is कितना वोल्ट लिया था? 10 वोल्ट दिया था, राइट? 10 volt. Volt. है ना? लेट मी चेक इट वंस। कितना है? 220 वोल्ट है, करेक्ट। ओके, so now what is given, you know, the question is a 10 volt 10 volt a 10 volt uh, 5 to sorry a 5 volt 5 to 40 milliampere Zener diode is connected as shown, right? Okay, so now this what is given, you know,
this is the question. What is given? 5 to 40 milliampere, right? 5 to 40 milliampere. So what is this? IZ minimum. What is this? IZ Is it maximum? Maximum. maximum right? हमने IS कैलकुलेट किया था. What was IS? कितना आया था IS हमारा? 17 हाँ? 400 milliampere. 0.02. नहीं नहीं नहीं, बाद में अभी इसमें कैलकुलेट yes 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 0.02 yes है ना. IS 12 माइनस सॉरी 10 माइनस 10 5 डिवाइडेड बाय 220 कितना आया था ये? 0.02. 0.0 करेक्ट है ना? Yes, sir. मतलब ये Yes, sir. कितना Yes, मिलियम्पियर sir. आया? 20 मिलियम्पियर. करेक्ट. Yes, sir. 20 या 0.025 ऐसा कुछ है. जस्ट सी 5 डिवाइडेड बाय 220 कितना आएगा ये? 0.0227 तो ये कितना मिलियम्पियर आ गया फिर? नहीं सर 0.0227 0.0227. ओके, मतलब ये 22 मिलियम्पियर आ गया, राइट? सो IS इज 22 मिलियम्पियर, करेक्ट? Yes, sir. Okay, okay. Now, can you find IL minimum and IL maximum? See, IS is equal to IZ minimum plus IZ IL maximum, right? So IL max will be this is IL maximum, right? IZ is Yes, sir. IS is equal to yes. So this will be IS is 17 22 minus IZ minimum कितना है? 5. 5. 5. 17 milliampere, correct? Yes, sir. Getting? Yes, sir. Yes, sir. All of you, please tell me, are you getting what I'm trying to tell? Yes, no? yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका दूसरा इक्वेशन था IZ plus IL. तो अभी क्या चाहिए आपको? IL. ये क्या हुआ? मैक्सिमम. सो IL मिनिमम चाहिए. सो IZ कैसा रहेगा? Max. Maximum. 40. ये चाहिए हमें. IL मिनिमम चाहिए. ये कितना है? IS फिक्स 22. सो IL मिनिमम विल बी माइनस, जब आएगा तो 0 मिली एम्पियर ले लीजिए. गेटिंग? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके. सो इसका मतलब ये है कि एक बार हमें क्या मिला है? व्हाट इज दिस? IL मैक्सिमम. सो IL मैक्स इज व्हाट? 17 milliampere. 17 milliampere. EL is IL max into RL minimum. Ma- So what is RL minimum? VL क्या है? We 5. बराबर है. Divided by what is IL maximum? 17 milliampere. 17 milli. So how much it is? कितना आएगा? 5 divided by 17. और ये मिली ऊपर जाएगा किलो में. कितना आएगा RL minimum? 0.29. 0.29. और कुछ बोलिए आगे. 4117. 294 ohms. ऐसा बोल दूं मैं इसको? Yes, sir. yes sir ओके मतलब इसका मतलब ये है कि मिनिमम रेजिस्टेंस शुड बी 294 ohms. मतलब ये 300 ohms बोल देता हूं मैं, राइट? इसके ऊपर ही आपको आउटपुट 5 वोल्ट्स कांस्टेंट मिलेगा. इसके नीचे अगर रेजिस्टेंस जाएगा तो आपको आउटपुट 5 वोल्ट्स कांस्टेंट नहीं मिलेगा. करेक्ट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. So range of RL, it should be greater than 300 ohms, right? Can you find range of IL? Yes. Okay. So let us do it practically. Okay. So इसका range क्या रखेंगे हम? कितना रखेंगे? Let us say that this is variable, right? So I can just I'm stopping the simulation and I'm okay. Instead of this variable resistor, can I just put a resistor here so that easy to connect, easy to show you. Okay. इसका कितना रेजिस्टेंस रखेंगे हम लोग? कितना लग रखेंगे? 300 ohms. कितना आया था? To be specific, 290. 294. 294. 294. ohms, right? Okay. तो अभी ये कैलकुलेशन के लिए आपने आउटपुट जो है वो कांस्टेंट 5 वोल्ट्स आना चाहिए.
So let us start simulation. Great. So I'm getting 5 volts. Yes. Yes, sir. Yes, अभी sir. Yes, sir. अभी देखिए लाइव में इसका मैं 300 करूंगा, आना चाहिए 5 वोल्ट्स आ रहा है, गुड। इसका अगर मैं 400 भी करता हूँ आएगा आउटपुट, यस Yes, Yes. sir. तकरीबन ये है। लेकिन इसका अगर 200 करूंगा तो आउटपुट नहीं आ रहा है, Variable. 5 वोल्ट्स आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। नहीं, तो मिनिमम रेजिस्टेंस कितना चाहिए आपका, 300 300. चाहिए, 300, 294. 5 आ रहा है 290. राइट, हाँ 294 चाहिए, 294 को परफेक्ट रीडिंग देना चाहिए इसमें। गेटिंग 5 वोल्ट्स है 5.28, इट्स इज ओके, नॉट एन इशू। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. So this is like how the out this is even if I am changing the load I am getting constant output. Okay, तो ये हो गया। अभी देखिए इसमें यही सर्किट जो है ये 10 वोल्ट्स के लिए काम कर रहा है। अगर 10.5 डालता हूँ तो 5 वोल्ट्स आ रहा है, राइट। अगर 12 डालता हूँ तो भी 5 वोल्ट्स आ रहा है। अगर 9 डालता हूँ तो भी 5 वोल्ट्स आ रहा है, राइट। अगर 8 डालता हूं तो 4। ओके, मतलब देखिए इनपुट में मैंने अगर 9 से लेकर राइट 12 तक वेरी किया तो भी आउटपुट मुझे 5 आ रहा है। गेटिंग? Yes, sir. Yes, So sir. like providing you the line regulation as well as it is providing the load regulation. Any problem in this? No, Simple है? No, No, sir. sir. Simple है। So this is Zener diode as a voltage regulator. Okay, so हमने प्रॉब्लम भी देखा और ये प्रॉब्लम है इसके ऊपर, और फिर हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि हाउ इट इज एक्टिंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इक्वेशन सिर्फ 3 है एंड दे आर वेरी सिंपल। यस, Yes, sir. Yes, sir. okay, so if now next part is yes of course we have this LEDs, right? So LED क्या होता है? Light emitting diodes. Okay, so within quick session मैंने बताया था कि एक बार ये आप go through कर लीजिए। LED क्या होता है? It is normal diode, लेकिन LED के सिंबल के ऊपर ये दो लाइट्स जो रे है वो इंडिकेट करते हैं कि this is emitting the light, right? Okay, so in construction of the LED it is same, only just the material is different, right? So what is LED? LED will emit the light, right, which is tend to be of monochromatic, मतलब एक ही कलर का रहेगा। Okay, and if you see the construction of the LED, right, then it is again you have the P region, we have the N region, right? But the thing is that we have a material which is made up of different we can say मीन्स नॉर्मल सिलिकॉन यूज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसमें अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ओके इट विल एमिट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। जैसे नॉर्मल डायोड में क्या होता है, whenever electron hole recombination, नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि whenever it is in forward bias what will happen, the electrons will move, right, and due to the movement of the electrons what will happen, there will be some energy which will get dissipated out of the diode, right? So in normal diode the energy is getting dissipated, that is in the form of heat, but in LED the energy is getting dissipated, that is in the form of, that is in the form Light. of Light. Light. so see whenever the electron is changing its state, maybe from valence band to conduction band, okay, जब ये transition होता है so that electron will release some energy, बराबर है, correct? Yes, sir. जैसे Yes, sir. conduction से valence band में जाएगा तो क्या होगा, it will take the energy, sorry, valence से conduction में जाएगा so it will absorb the energy. Whenever it will change the band what will happen, it will release the energy. In normal diode that energy is released by the in the form of heat, but in LED the energy is released in the form of light, right? Light. Now what kind of light you want, okay, so it depends on the material which is used for construction of the uh, LED, okay, construction of the diode. So if you are using gallium arsenide, right, then the LED will reflect or it will radiate infrared color of light, that is you use that LED in your remote controls, right? So that are your infrared lights, right? Then second is your, if you are using gallium arsenide phosphate, then it may emit red, right, depending on the concentration it may also emit orange color of light, right? Now if you want green, which material you will be using, aluminum gallium phosphide, right? If you are using this combination you will get green color of light, okay. And if you want, let us say, bluish or near blue color, right, you can use zinc
selenide, right? So all this depending on what material is used in the construction of that LED, right? That light will get reflected. Any problem in this? Okay, No, LED sir. No, sir. use करेंगे forward or reverse? Forward. Always, Forward. always LED is used in the forward bias, right? And you can see as the forward current increases, the light output will also increase. Okay, Increase. also it depends on the temperature. Okay, so ये एक बार go through कर लीजिए. मैंने इसको आपको last to last lecture में बोला था कि एक बार आप LED देख लीजिए. Okay, now where we are using this LEDs? Everywhere. Okay, normally for an indicator we use this LED. Okay, basically in the lift we can see the digits, right? So that digits are nothing but your that display is called as your 7-segment display. We use infrared LED in remote control as well as an indicator. Okay, so ये काफी जगह पे आपने ये डिस्प्ले देखा होगा, and this is your 7-segment display. Okay, so this display we can classify into two types. One is your common anode display and second is your common cathode display, right? For example, for example देखिए ये 8 LEDs है and these are connected like this. Okay, A B C D E F G H, right? And this anode is connected to positive and ground में जिस टर्मिनल को ग्राउंड कनेक्ट करूंगा वो LED फॉरवर्ड बायस में जाएगा एंड इट विल गिव द लाइट. ओके, सो नाउ इफ आई वांट टू डिस्प्ले 1, राइट? सो मुझे अभी यहाँ पर डिस्प्ले 1 करना है, यहाँ पर 1, तो कौन से LED को ऑन करना पड़ेगा मुझे? बी और सी. मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ग्राउंड को सिर्फ बी और सी को कनेक्ट करूंगा, सो दैट एज सुन एज आई विल कनेक्ट इट टू ग्राउंड, दिस इज कनेक्टेड टू 5 volts, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एनोड, ग्राउंड 0 is connected to cathode, so this is in forward bias, so it will emit the light, and C also it will emit the light, so this B and C will glow. So like that, what digit you want to display, depending on that you need to connect. Okay, so इसमें क्या common है? Anode is common. So this is called as common anode configuration. Similarly, you can keep cathode common, and that is called as common cathode configuration. Okay, so this is your regarding a short introduction regarding LED. If you have any difficulty, just go through it, and if you have any difficulty, you can just ask to me. Okay, so any problem in this? No, sir. Okay. No, sir. Quickly, I will Actually, sir. quickly I will take that.